students, and the MCQ, it is serial number 1.1, and the very first time we are dealing with this Madhya Pradesh National Health Mission Community Health Officer Homeopathy Examination. It was conducted on 23rd June 2022. Is it visible to you? Is it? Yes, sir. Nice, 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 nice. So we are going to take MCQ number 1 to 20, 1 to 20 in this session. And this particular 1 to 20 is the part 1, and it contains, the part 1 contains anatomy, physiology, and organon. There are 3 things which 1 to 20 questions are going to deal with. Okay. Now, should I go ahead? So you can see the title, Madhya Pradesh National Health Mission Community Health Officer Examination, June 22, 23rd, and we have the question now. We have the question now. Here it comes on your screen. This belongs to anatomy. This question belongs to anatomy, and it tells us, the question is, second constriction in esophagus is seen at the following site. Okay. A, the variable A is where it crosses left main bronchus. Variable B, crossing of aortic arch, and variable C tells us at pharyngoesophagus junction. Pharyngoesophagus junction, and variable D is where it pierces the diaphragm. So opening for esophagus, diaphragmatic opening for esophagus is the D part. So if you solve this question, the answer is B, crossing of aortic arch. Now I am going to deal with this particular fact here. Let us recall. So we should know about what are the esophageal constructions are. Anatomical consideration is, so we have this diagram, and here it shows at the incisor teeth there is 0 centimeter. See the diagram. Incisor teeth 0 centimeter, and here cricopharyngeus junction. Can you see here? Cricopharyngeus junction. Here it is 15 centimeters from incisor teeth to C6 cervical vertebra. That level is cricopharyngeal constrictor is present 15 centimeter away from incisor teeth, and it is having at the C6 level of cervical vertebra. The second constriction is aortic constriction. It is crossing of aortic arch. This is the aortic arch. It is crossing, and then we have got second constriction, bronchial constriction, where the left primary bronchus is going to cross it. And the last one is at the diaphragm, where it is pierces, the esophagus pierces and goes into the fundus of the abdomen. So this level of sphincter is 40 centimeter. Bronchial constriction is 27 or 28 centimeter, 24 to 25 centimeter is aortic constriction, and cricopharyngeal constriction is 15 centimeters. So first constrictor, let us again revise this. First constrictor, pharyngoesophageal constriction or cricopharyngeal constriction, it is beginning at the 15 centimeter or 6 inches. 15 centimeters or 6 inches from incisor level is at the 6th cervical vertebra. It is the narrowest part. It is the narrowest part of esophagus. Please remember. Can you see it? It is landmark is been highlighted. The second constrictor is point where it crosses the arch of aorta. This distance is approximately 22.5 centimeters or 9 inches. Level is at the level of T4 and T5 thoracic vertebra.
T4 and T5 thoracic vertebra. This is the level where the superior mediastinum is separated from the inferior mediastinum. This is the point where the bifurcation of trachea occurs, right primary bronchus and left primary bronchus. So that is a very important landmark, anatomical landmark. And bony landmark anteriorly is manubrium sterni and body of the sternum, the angle of Lewis. It is somewhere at the level of angle of Lewis. Secus constrictor is present at this particular point, and it is approximately 22 centimeters, 22.5 centimeters away from the incisor teeth. Can you see it? Aortic constriction. And now we can go for the next third constrictor where it crosses by the left main bronchus. It is approximately 27 centimeters or 11 inches from the incisor. Level is D6 or thoracic 6. D6 or thoracic 6 vertebra. Let us see its level. It is bronchial constriction. And the fourth constrictor is where it passes through the esophageal hiatus of the diaphragm, and it is 40 centimeters from the incisor, or you can say 15 inches from the incisor at the level of 10 thoracic vertebrae, 10 thoracic vertebrae. So our answer was B, and B is crossing of aortic arch, and this is the aortic arch. So second constrictor of esophagus is seen at aortic arch, and aortic arch, as you know, is at the level of T4 and T5 or angle of Lewis approximately. So this is the answer, and this is the diagram which helps you. You can give me the feedback also if you think it is too much of a detail or you require this much of a detail to revise your anatomy. Most important thing is we are not jumping for the answer. We are trying to understand the question and the anatomical fact at the same time, so we will not forget next time. Idea is to understand with your knowledge of anatomy, which will be, we are going to refresh with every question. We are going to refresh your knowledge, whatever, whether it is anatomy, whether it is organ, whether it is materia medica. We can go to the reference books and we are going to revise your knowledge bank. So that is what it is. Is it all right? Let us go to the second question. Yes, sir. Now, Yes, sir. we are going to the second question, and this also belongs to anatomy. And here we find second question is, which among the following statement is false about clavicle? Which statement is false about the clavicle? Now let us go to the statement. Statement 1, a long bone which ossifies in the membrane. A long bone which ossifies in the membrane. Variable A. Variable B, it is the horizontal bone, only horizontal bone in the body. C, there is no medullary cavity is present. And D is common site of fracture is at the junction between medial 1/3 and lateral 2/3. Can you give me the answer? What is the answer? Anybody? Anybody? चैट बॉक्स ऑन कर देते हैं. कहाँ है चैट बॉक्स? चैट On है, sir. Students, you can even unmute yourself and say. अगर कोई बात नहीं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाँ, यस प्लीज. आप D, sir. B is the answer. B is the answer. Hello. D, sir. Okay, D. all right. B is the answer. Let us see. And here comes the D is the answer. Okay. D is the answer. Let us justify whether this D answer is correct. We are going to justify. And for correction of justification, we find certain information. The clavicle is most often fractured in the middle third of its leg, which is weakest point. You are right. This statement is wrong.
Why? Because the clavicle is going to be fractured most of the time in the middle one third. And let us see the diagram. Here we can see the X-ray, and in X-ray, this is the medial end of the clavicle. This is sternal part of the clavicle, and this is acromion part of the clavicle. Can you see the sternal part and acromion part? And in the middle part, it is fractured. Here it is fractured. And here you can see the first rib, and here you are looking at the second rib. This is the second rib. So this radiological finding here depicting that fracture, common fracture is middle one third, middle third. Huh? So let us see what are the common sites and what is the percentage of time you will come across different fractures. Lateral one third towards the acromial end, if the fracture occurs in lateral one third, two third, lateral one third, approximately 15% of time you will get. If you see 100 cases in a busy hospital, you will find 15% cases will come with lateral one third fracture. Middle one third fracture will be 80% cases, and medial towards the manubrial clavico-manubrial joint side, you will have approximately 5% cases. So that is the ratio how we are going to see in our clinical practice the fracture of clavicle. Now, other features which are very, very important to recall, the peculiar features of the clavicle, let us recall the peculiar features. So we can go for first, it is the only long bone that ossifies in membrane. The A statement is correct. A statement is correct. Then you see it is the only long bone that lies horizontally. That too also is a correct statement. It is generally said to have no medullary cavity. Yes, this is also a true statement. So A, B, and C variables are correct. Only incorrect variable was D4, which we know where the fracture occurs. But other features we will also see. Uncommon features about clavicle, they are also here. It is subcutaneous throughout. Please remember, this bone is subcutaneous throughout. It is the first bone to start ossifying, and it is the only long bone that has two primary ossification centers. This is the only long bone which has got two primary ossification centers. Please remember this fact also. It is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. It is occasionally pierced by the middle supraclavicular nerve. If the supraclavicular nerve is going to pierce somewhere, here is the nutrient foramen also, then what will happen when the callus is going to form? That callus is going to press upon the supraclavicular nerve. That is going to press the supraclavicular nerve. That can be one problem with such kind of a fracture takes place. And it receives the weight of the upper limb via lateral one third through the thoracoclavicular ligament and transmits the weight of upper limb to the axial skeleton via medial two thirds. So this is the much more stressful point in the weight transmission. Whenever you put weight or you hit somebody, this particular point gets much more weight, and that can cause the fracture. Is it all right? Yes, sir. Yes, sir. It is all right? Okay, right then. Let us go to the third MCQ. The third MCQ is here. Which of the following arteries supplies blood to the pons? Which of the following artery supplies blood to the pons? Variable A, anterior spinal artery. Anterior spinal artery. Second is B is basilar artery. B is basilar artery. Variable C is bulbar artery. Variable C is bulbar artery, and variable D is posterior inferior cerebellar artery.
posterior, inferior, cerebellar artery. Anyone can please give me the answer, please. Everyone. B is the answer. Basilar artery. Which of the following artery supplies to the pons? And here the answer is coming. सिद्धार्थ मिश्रा what was कौन सा वाला आंसर आया था अभी आया मैंने देखा एवरीवन क्या देखा था भूल गया मैं सर शिवांक रस्तोगी ए शिवा बी शिवांक का सिद्धार्थ बी मिश्रा है का और डी है सिद्धार्थ सिद्धार्थ मिश्रा का डी डी है। सिद्धार्थ अच्छा मिश्रा डी ओके ऑल सिद्धार्थ राइट का लेट बी अस है और शिवांक का बी है। बी है तो बी है बेसिलरी आर्टरीज अच्छा शिवांक रस्तोगी इज गिविंग अस द आंसर बी and here it is the answer B. Excellent. Excellent in the sense, let us recall basilar artery. At the lower border of the pons, the two vertebral artery joins to form basilar artery. The formation of basilar artery is two vertebral arteries. They are going to join. So here you will see these are two vertebral artery. Anterior spinal artery is the branch of vertebral artery. These are two vertebral arteries, and these two vertebral arteries give one branch. Vertebral artery give branch, anterior spinal artery. Both of the arteries unite together and go down to supply the spinal cord in the upper segment of the spinal cord. Upper segment of the spinal cord. So anterior spinal artery is not the choice. It is a wrong choice. Anterior spinal artery is a wrong choice. Okay. Now these two arteries, when they unite, they are going to form the basilar artery. From here to here, basilarity artery is going to form, and basilarity artery is going to supply pontine arteries. Multiple small arteries are there. Can you see? There are multiple arteries are there and they are supplying to pons, and the basilar artery with the union of two vertebral arteries is going to form basilar artery is going to supply to the pontine artery. Now this basilar artery is going to divide into superior cerebellar artery, superior cerebral arteries and superior cerebellar artery, superior cerebral artery and superior cerebellar artery. So these are going to supply, superior cerebellar is going to supply to the small brain cerebellum, and posterior cerebral artery will give one branch, posterior communicating artery, which is going to unite with middle cerebral artery, and then middle cerebral artery has got one branch, anterior cerebral artery. On opposite side, we have anterior cerebral artery. They unite together. Anterior communicating artery, anterior cerebral artery supplies the frontal lobe anteriorly. Middle cerebral artery supplies the lateral surface of the cerebellum, and posterior cerebellar artery supplies the occipital part. So that is how the blood supply is here. And vertebral artery, can you see? Posterior and inferior, basilar artery, and this is branches of vertebral artery supplies to the pons. So the basilar artery provides nearly 20 paramedian and circumference perforating arteries to the pons and midbrain. 20 paramedian. This is the median paramedian by the side of the midline. They are going to have, there is a circumference artery, perforating arteries, and they will go into the substance of the pons and midbrain. And midbrain, this is very, very important because there are infarcts of this particular vessel, and infarct in the pontine region, lateral and medial supplies are different, and that can have different tracts and fibers will get affected. So they have a very different kind of a clinical presentation. This is a very profound site where a lot of problems can occur. So this is a very interesting blood supply for us, and we need to see this more carefully. In future, we will see if it is. Now,
We go to the next question. The next question is question number 4. Given below are two statements. Two statements are there. Number one statement is syphilis. Syphilis nerve is a branch of femoral nerve. Syphilis nerve is a branch of femoral nerve. And second statement is extensor digitorum brevis is present on the dorsum of the foot. Is present on the dorsum of the foot. And choose the most appropriate answer from the options given below. Option A is both statement 1 and 2 are correct. Both are correct. B is both statement 1 and 2 are incorrect. And C is a statement 1 is correct, but a statement 2 is incorrect. And here is the D. Statement 1 is correct, but a statement 2 is statement 1 is correct, incorrect, but second is correct. So answer is A. Answer is A. So let us, how many people agree with answer A is correct? How many of us are positive that answer A is correct? Okay. Okay. Let us go to the answer then. Let us go to the answer. So very first thing, this particular diagram is for statement 1. Saphenous nerve is branch of femoral nerve. Please see this particular diagram. Saphenous nerve is branch of femoral nerve. So L2, L3, L4, these are the supply areas, femoral nerve having segmental supply L2, L3, L4, and it femoral nerve goes to the thigh region, and here it divides into anterior division and posterior division. In the thigh it divides anterior and posterior division, and then the posterior division goes into the popliteal fossa here near popliteal infrapatellar branch, and then we have saphenous nerve. So in the popliteal fossa probably there are certain branches which are going to supply to the skin of the medial side of the leg, and so largest branch is saphenous nerve. So it is true. This statement is true. Okay, and this is how we have to orient this diagram. This is the superior aspect, this is the inferior aspect, this side is the medial side, and this side is the lateral side. Okay, this side is the lateral side. So saphenous nerve, and it is the largest cutaneous branch of the femoral nerve. Saphenous nerve is the largest cutaneous branch of femoral nerve. It is responsible for the sensory innervation along the anteromedial and posteromedial aspect of the leg up to into the medial side of the foot. Okay, so this is from where the information is coming: anatomy, bony pelvis and lower limb, thigh femoral nerves. This is the website from where this particular information is collected. Okay, now we'll go the statement 2. Extensor digitorum brevis is present on the dorsum of foot. Extensor digitorum brevis is present on the dorsum of foot. So here the text is extensor digitorum brevis is thin muscle found on the dorsum of the foot. This region contains the dorsal compartment of the foot, which houses extensor digitorum brevis and extensor hallucis brevis. These muscles are covered with deep dorsal fascia of the foot. And the origin, let us see, origin is of extensor digitorum brevis, supralateral surface of calcaneus bone. This is the calcaneum, biggest bone here, heel bone, calcaneum bone, intraosseous
Talocalcaneal ligament. Here there is a talocalcaneal ligament, stem of the inferior extensor retinaculum. Retinaculum, extensor retinaculum is not shown here because it is a soft part. Only bony part we are looking here. And extensor digitorum longest tendon of 2 to 4, and nerve supply is deep peroneal nerve, and it is also known as deep fibular nerve, and its segmental supply is L5S1. Its segmental supply is L5S1. So whenever we go for superficial reflexes, when we see the superficial reflexes plantar, we are going to stimulate L5 and S1, L5 and X1, and if the plantar is extensor, it goes up. Okay. So this is the information which we would like to share, and action is distal interphalangeal joint. Toes are extended. Toes are extended. Origin, insertion, nerve supply, and action we have. We go to again anatomy section. Question number 5. Which one of the following muscle is the flexor of elbow joint? Please see. Flexor of the elbow joint being supplied by extensor nerve. Being supplied by extensor nerve. So, which is the extensor nerve? Which is the extensor nerve in the arm? Ulnar. Ulnar. Ulnar is the extensor. Wrist का, elbow का, ठीक है ना? Ulnar nerve is a extensor. Anyone please? Anyone please? Ulnar nerve, median nerve. We have 3 nerves. Median nerve, ulnar nerve, and radial nerve. Okay? Wrist drop. Do you remember wrist drop? Radial nerve. Okay, radial nerve. That's right. Radial nerve. So we are going to radial nerve. The radial nerve is extensor. But this flexor, this muscle is supplied by extensor nerve. And let us see which is this muscle. Anconeus is the muscle. Number 1, possible answer. Variable A, anconeus. These are the distractors. These are the distractor. Number 1 distractor is anconeus, very strong distractor. Second is brachioradialis. C is supinator. Variable C is supinator and variable D is triceps. Which one is the muscle? Which one is the muscle supplied by radial nerve? Brachioradialis. Brachioradialis. Radialis. Brachioradialis. Okay, good. Brachioradialis. So answer is B, brachioradialis. And here what we find, let us recall, brachioradialis. Although anatomically part of the posterior forearm muscles known as forearm extensor, brachioradialis fibers fiber orientation enables it to flex the forearm. Though it is present in the extensor compartment, but it's the direction of the fibers is such that it helps in flexion of the forearm, especially when the forearm is semi-pronated. It is not total pronated, it is semi-pronated. तो हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं? रिफ्लेक्स देखते हैं यहां पर. तो दैट रिफ्लेक्स इज ब्रेकियोरेडियलिस को ही देखना पड़ता है हमको. एनीवे, सो कैन यू सी द मसल ब्रेकियोरेडियलिस? Yes. Origin is lateral supracondylar ridge of the humerus, the lateral intermuscular septum of the arm. This is medial condyle. This is lateral condyle. This is medial condyle. So all muscles which are coming from the medial condyle, they are flexors. Wrist के flexors हैं सारे के सारे. They are flexors.
And then we have insertion proximal to styloid process of radius. Can you see the styloid process of radius? Radius is the lateral bone. Ulna is the median bone. In the forearm, this is the arm, this is forearm, this is hand. So in the forearm, this is upper arm, this is the forearm. We have radial side and ulnar side. The radial side is towards the thumb side. Here is the radial bone is present. Medially, ulna is present. So styloid process is present at just below the base of the thumb. So insertion is styloid process of radius proximal to, and the nerve supply is radial nerve. The segmental supply is C5, C6. The segmental supply is C5, C6. And action at the elbow joint, forearm flexion, when semi-pronated. It is not total pronated, when half pronated, semi-pronated. That is the catch of it. Anyway, nice. So let us go ahead with next. Is it okay? Students, any question till now? Any doubt up till now? We can take any doubts. हाँ वो लिख के डाल दो वो वाले, नोट करके दे दो हमें. हाँ जी बताएं. सर रेडियल नर्व की रूट वैल्यू तो C5 to T1 होती है ना? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है. रेडियल नर्व की सर मुझे लार्जेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है. नहीं, ये भी मुझे देखना पड़ेगा. लार्जेस्ट नर्व है क्या, ये भी देखना पड़ेगा. मुझे इस वक्त रैंडमली याद नहीं आ रहा है इतना मेरा अभी, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम लोग. देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ माय गोइंग टू द टेक्स्ट. 5 है ये. मैं कोशिश करता हूं, शायद मेरे पास इंफॉर्मेशन इस वक्त हैंडी हो कहीं पर, ये भी संभव है. ये क्वेश्चन पेपर में ओके 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 BHMS वीडियो एमसीक्यू कलेक्शन, एमसीक्यू कंपेनियन कलेक्शन एंड वर्कआउट. ओके, ये वाला था हमारा 23 जून का है ना ये. हाँ 23 जून का है. ओके, और क्वेश्चन नंबर है ये 5. क्वेश्चन नंबर 5. मैं आपको दूसरा भी रिवाइज. अभी जब आप देख लेंगे बाद में कल तो नहीं, मैं नर्व के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सी चीजें रिवाइज 2 मिनट में करवा दूंगा. मेरा तो क्वेश्चन बैंक कुछ वो होगा तो बाद में ग्रुप में ऐड हो जाएगा ना. मैं आपको एंकोनियस का, सुपिनेटर का, ट्राइसेप्स का भी दिखा देता हूँ ना, ओरिजिन इंसर्शन. आपको फिर बाद में कहाँ देखने का मौका मिलेगा ये सब कुछ. इट विल नॉट बी सो इजी टू फाइंड आउट. यस सर, ड्यूरिंग द डिस्कशन ही ठीक. अभी डिस्कशन चल रहा है, बात निकली है, बात से बात निकली है, तो 2 मिनट में मैं उसको सॉल्व करता हूँ. ये देखिए, ये ब्रेकियो रेडियलिस का ये वाला जो आंसर था हमने देख लिया था. ये वाला हम देख रहे हैं एंकोनियस का. द एंकोनियस इज ए स्मॉल ट्रायंगुलर मसल ऑफ द आर्म. इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो. कैन यू सी, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डिस्टल ह्यूमरस टू द प्रॉक्सिमल अल्ना. ये डिस्टल ह्यूमरस, तो लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस में यहां पर है, ये अल्ना पे जाकर के इंसर्ट हो रहा है. क्या नहीं, origin lateral epicondyle of humerus, insertion lateral surface of the olecranon. This is the olecranon process. Can you see where the triceps is getting inserted? This is the triceps muscle. From posteriorly we are looking at the bones, and this part is visible here. That is lower end of humerus.
So where the ulna is present medially. So this is medial epicondyle and this is the lateral epicondyle. And here we are talking about Anconius taking origin from the lateral epicondyle. So it is correct. And it is getting inserted on the lateral surface of the olecranon. So this was olecranon process. So it is getting attached over here. It is radial nerve C7 and C8. C7 and C8. Probably it has a very big distribution. C5 and C6 was supplying here. C7 and C8 is supplying here. Assist in forearm extension at the elbow joint, and it also stabilizes the joint. The Anconius muscle belongs to the superficial extensor compartment, along with brachioradialis, extensor carpi radialis, longus extensor carpi radialis, brevis, and extensor digitorum, extensor digiti minimi, and extensor carpi ulnaris muscle. Brachioradialis we have seen. We would like to see the supinator muscle. Now for supinator muscle, see this diagram. Supinator is a spiral muscle contained in the posterior compartment of the forearm. This is upper arm, this is forearm, posterior compartment of the forearm along with brachioradialis and the superficial and deep forearm extensors. So he tells us that origin is lateral epicondyle of the humerus, radial collateral ligament, annular ligament across head of the radius hota hai, two out. And supinator crest of ulna, insertion lateral posterior and anterior surface of the proximal third of the radius. Nerve supply is posterior intraosseous nerve C7 T1, posterior intraosseous nerve. So posterior intraosseous nerve, supinator, टोर्नेटर ये है, supinator ये है, ठीक है. And its action is proximal radio-ulnar joint. So this is the proximal part of radio-ulnar joint and this is the distal part, proximal part of radio-ulnar joint. And forearm, this is the supination, this is pronation. So triceps को भी देख लेते हैं. It is, triceps means there are three heads, muscle of the arm, upper arm का muscle है. The main function of triceps is extension of the forearm at the elbow joint. Three heads is a long head, infraglenoid tubercle of the scapula, medial head, posterior surface of the humerus, and lateral head is posterior surface of the humerus, supplied by superior to radial groove, and this medial head is inferior to radial groove. Insertion, we see olecranon of the ulna and fascia of forearm. Nerve supply is the radial C6, C8, C6, C7, C8, and action is extension of forearm, shoulder joint. तो नर्व के बारे में अभी हमने कुछ ज्यादा नहीं देखा है, तो नर्व के बारे में अभी मेरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, पक्की नहीं है, लेकिन मैं आपको वापस ले चलता हूं क्वेश्चन बैंक में. रेडियल नर्व के बारे में देख लेंगे हम लोग. तो रेडियल नर्व के बारे में भी देखा जा सकता है अगर चाहे तो. मैं अगर या उसको बाद में देखते हैं, रेडियल नर्व को देखेंगे लेकिन आज नहीं देखते हैं. अभी इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एनाटॉमी में. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एनाटॉमी. The epithelium forming the lining of kidney tubules is, okay, it is a difficult question for me. The epithelium forming the lining of kidney tubule is A. Squamous epithelium, B. Glandular epithelium, C. Cuboidal epithelium, and D is columnar epithelium. The answer is C. And let us recall, in the kidney, simple cuboidal epithelium lines the lumina of convoluted tubules. So this is the histological feature we have. This is the histological feature, and here it is the
cuboidal cells which are going to form the lining of kidney tubules. This is the lumen here, and this is the how it is forming. The slide of the kidney medulla shows simple cuboidal epithelium lining at the lumina indicated by LU of some convoluted tubules. So this is the reference from where we have got this information. Now let us go to now it comes to the physiology. Now it comes to physiology part. So we have 6 questions. In this particular paper, there were total 6 questions from the anatomy. And see, so many part, lower limb से आया, upper limb से आया, thorax और abdomen से जो हमारा viscera का आया, और एक central nervous system से आया. तो उन्होंने सारे पार्ट कवर करने की कोशिश की. लोअर लिम्ब भी कवर किया, एक विसरा भी कवर किया, किडनी वाला विसरा भी कवर किया उन्होंने. तो दे हैव बैलेंस्ड देमसेल्फ कि दे हैव बीन यूज्ड एवरी पार्ट ऑफ द एनाटॉमिकल सेक्शन दे हैव टच्ड. बट देन यू सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू you can say choose a very, very important question. What can come and what cannot come? Anatomy is a vast topic. हिस्टोपैथोलॉजी से आ सकता है, तुम्हारा ऑस्टियोलॉजी से उसने एक दे दिया, अप्लाइड का भी दिया, वही अप्लाइड में भी था. जो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल था वो अप्लाइड भी था. मतलब ये रीजनिंग, इसकी रीजनिंग भी थी. और जैसे अभी रेडियल नर्व वाला क्वेश्चन आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसमें कंसेप्ट तुम्हारे अपर लिम्ब के, नर्व्स के, जॉइंट्स के क्लियर होने चाहिए, मसल्स के क्लियर होने चाहिए. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर रीडिंग इट बिटवीन द लाइन एनाटॉमी, इफ यू आर जस्ट टचिंग मगिंग अप कि इसका आंसर ये है, तो यू मे नॉट बी एबल टू रिमेंबर डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, एंड यू विल हैव नो confidence while answering. But if you have prepared your system wise and nicely, you have given sufficient time to one particular topic. Whatever you read sincerely, and you read in terms of extensively and with clear concept. That helps in having a wide knowledge after a considerable period. So don't study in hurry. Don't study in short span of time to just recall and remember. Memory based questions are sometimes good, but then their own fallacy rate is very high, because you can answer the question in examination, but when we go to the viva or your interview, we sometimes try to understand whether you have understood the problem entirely or not. So we can ask you few questions and we can understand the in-depth knowledge you carry with you or you don't carry with you. So that is very, very important. So maybe you are going to clear the theory paper, but then in interview, when we recall certain things from your paper, you may not be able to answer with that confidence. So always remember, whenever you appear in the examination, review those question papers thoroughly and with extensively. So it will, if you come across and a chance to appear in the interview, you know that you are going to do it very nicely and fairly. That is what I feel. So मेरा ख्याल है हम यहीं पर रहने देते हैं इसको, एनाटॉमी पार्ट को छोड़ करके, और मुझे आप अपना सिस्टम बताएं तो हम उस सिस्टम के अनुरूप चलते हैं. उस सिस्टम के अनुरूप चलते हैं, क्योंकि हम बहुत तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं. पढ़ाई करने का तरीका जो है वो किस तरह से आपको अच्छा लगेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम बहुत सारे तरीकों से चल सकते हैं. हमने ये देखा है. डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं. तो मृणाली, हम सजेशन ले लेते हैं 5-10 मिनट में. यस सर. हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम किस तरह से अगली बार जब शुरू करते हैं तो क्या क्या शुरू करें, या क्या टॉपिक. ये वाला क्वेश्चन पेपर तो हम करेंगे, नो डाउट अबाउट इट. तो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा अंदाजा रहेगा जिससे कि हम. राइट सर. सो वन बाय वन जाना ही बेटर है क्वेश्चन पेपर में, तो है ना सर? नहीं, वो तो क्वेश्चन पेपर हम इस तरह से करते हैं कि हम उसको जब जाते हैं क्वेश्चन पेपर में तो सारे ही क्वेश्चन हो जाते हैं. 12 के 12 सब्जेक्ट डील किए होते
हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उनके नंबर कितने हमें पता लग जाते हैं। हर क्वेश्चन पेपर में हमें नंबर का पता होता है कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। एनाटॉमी में 5 आए थे, फिजियोलॉजी में 4 आए थे, एफएमटी में 3 आए थे, और पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में कुछ और आए थे, या एफएमटी में के अलावा क्लिनिकल जो अपनी फॉरेंसिक मेडिसिन में 2 आए थे, और नॉन में 10 आए थे, या 20 आए थे, या 25 आए थे, मटेरिया मेडिका में 20 आए थे, मेडिसिन में 10 आए थे। So that depends. That we always know, and every state wise it differs, because certain states they put general knowledge questions also, and there are papers which are entirely devoted to one particular discipline. Like there is a lecturer in pharmacy, there is an assistant professor in medicine, there is a post for only medicine. तो आपको डिपेंड करता है कि उसके क्वेश्चन का फिर तरीका बदल जाता है, उसकी डेप्थ भी बदल जाती है, बहुत सी चीजें बदल जाया करती हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्वेश्चन हल करते हुए। स्टूडेंट्स अनम्यूट करके बता सकते हो आपको कुछ भी जो चाहते हो कि क्या कर। हाँ बोलो शिवांक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये वे तो बहुत अच्छा है आपका, जैसे अभी आज आपने पढ़ाया, बट इन माय ओपिनियन सर कि हमें ना एक सब्जेक्ट वाइज एंड देन उसमें भी फिर टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में सर बता रहे थे वीके सर, वीके खन्ना सर प्रोबेबली, कि एक सब्जेक्ट लेकर के फिर उसमें एक सिस्टम वाइज, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई और हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं वैसा। पर्टिकुलर डिजीज वाइज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ वो कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग वैसा। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं, दो दो तीन तरीके हैं। जैसे हम एनाटमी पढ़ते हैं, सिस्टेमिक एनाटमी पढ़ते हैं, रीजनल एनाटमी पढ़ते हैं। कभी कभी हम सिस्टेमिक एनाटमी में ऑस्टियोलॉजी ले लेते हैं, मायोलॉजी ले लेते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ले लेते हैं, या फिर अपर एक्सट्रीमिटी लेते हैं, उसमें हम मायोलॉजी ले लेते हैं, उसमें बोन्स ले लेते हैं, उसमें नर्व्स ले लेते हैं, उसमें आर्टरीज ले लेते हैं, उसमें जॉइंट्स ले लेते हैं, उसकी अप्लाइड ले लेते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। लेकिन अपने आप को अगर सिर्फ मेडिसिन ही पढ़नी है, और मेडिसिन में अगर आपको रिवाइज करना है मेडिसिन, तब मजा आता है जब मेडिसिन रिवाइज करनी है। तो मेडिसिन में ट्रॉपिकल डिजीजेस देख ली, इन्फेक्शियस डिजीजेस देख ली, रेस्पिरेटरी डिजीजेस देख ली, नर्वस सिस्टम की डिजीजेस देख ली। नर्वस सिस्टम की भी डिजीजेस में बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। जैसे कि मैं पसंद करता हूं कि डीजेनरेटिव ग्रुप में एक में रख दो, डीमाइलिनेटिक डिजीज को एक में रख दो, ठीक है ना। कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है उनको एक में रख दो। तो जैसे विल्सन्स डिजीज है, हेरिडिटरी है। जैसे अपना जिसमें वो अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस हो जाता है, नाम भूल गया मैं उसका, कोरिया है, या बहुत सी बीमारियां हैं जिसको कि एक सेगमेंट में डाल करके वी कैन स्टडी। फिर कई बार हम लोग सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्रेनियल नर्व भी पढ़ते हैं, ये भी होता है, क्योंकि क्रेनियल नर्व का पूरा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। या फिर जैसे कभी एक टॉपिक ये होता है जैसे हेडेक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। तो हेडेक में तो हम ब्रेन ट्यूमर भी पढ़ते हैं, मिग्रेन भी पढ़ते हैं, क्लस्टर हेडेक भी पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकेफेलस भी पढ़ते हैं। देर आर सो वाइड वेराइटी ऑफ वे, बट देन यू हैव टू सी दैट व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू वुड लाइक टू रिवाइज। You important topic wise we have to go to what is our syllabus, what is going to be asked, and what is the area where we are going to put that much time. It depends upon how much time you can spare. So on that particular topic we can spare, हम एक दिन में खत्म कर देंगे। अब एक दिन में खत्म तो कर देंगे वो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें खत्म करेंगे। अगर सिर्फ अभी आज को फास्फोरस ही पढ़नी हो, तो फास्फोरस में आप कौन सी किताब से पढ़ना चाहेंगे, हमें जरूरी यह है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं फास्फोरस, तो मैं एलन को पसंद करूंगा। अगर आप अपनी रोजमर्रा की पढ़ाई में, क्लासरूम पढ़ाई में पढ़ना पसंद करेंगे, तो फिर मेरी चॉइस सबसे पहले तो दुबे होगी। दुबे के बाद फिर मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा चाहें तो केंट को पढ़ लें।
तो मेरी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। फिर उसमें मॉडर्न भी देखना चाहते हैं कि इनपुट्स मॉडर्न क्या है, मॉडर्न इनपुट्स है तो रडार के इनपुट्स क्या है, रडार के कीनोट देखना चाहूंगा मैं। तो एवरीबडी है, फटक को देखना चाहूंगा, रडार को देखना चाहूंगा। पहले के जो डॉक्टर्स थे वो उसको नैश को जरूर पढ़ते थे, लीडर्स। तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए teaching you have in the classroom teaching, and what kind of a questions you have been asked, what kind of a concept you are developing. So we go in a different way. We are very flexible. Every system is open to us. Whatever you like, we can develop that particular orientation. It is not difficult. It is not difficult. आप जैसा भी चाहेंगे वैसा कर लेंगे हम। सर चैट में यही आ रहा है कि टॉपिक वाइज डिस्कशन, सर वही हमने भी वैसे ही सोचा था सर, टॉपिक वाइज हाँ, ठीक है। टॉपिक, सो दैट दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड एंड रेडी। तो कौन सा वाला टॉपिक पहले? नेक्स्ट टॉपिक के लिए दे दो टॉपिक, पे सब बच्चे पढ़ नहीं, के टॉपिक नहीं, फिर उसमें मेडिसिन चलेगी। अगर मेडिसिन पढ़ना है तो सिर्फ मेडिसिन चलेगी, मेडिसिन में फिर वो टॉपिक चलेंगे, सब्जेक्ट भी है इसमें। हाँ, क्योंकि वो सारे टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 देखना होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं बीएचएमएस की या एमडी की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, हवा में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की नहीं करवा रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट की करवा रहे हैं, क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट की। तो जो मेडिसिन है, फिर आप बताएंगे मुझे कि मेडिसिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी किताब में से पढ़ना चाहते हैं? आप डेविडसन पढ़ना चाहते हैं, गोलवाला पढ़ना चाहते हैं, हैरिसन पढ़ना चाहते हैं, या आप जो भी है, मतलब 2 4 5 किताबों में से आपकी पहली दूसरी तीसरी किताबें आपकी यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड क्या है वो भी जानना चाहिए। शिवांग कह We can cover one topic or one system MCQ that can come from that topic. अब टॉपिक ऐसा होता है कि कभी कभी हम एक ड्रग को लेके चलते हैं और कभी कभी हम एक सिस्ट मतलब ऑर्गन के ही क्वेश्चन देखेंगे, या मटेरिया मेडिका के ही क्वेश्चन देखेंगे, या रिपोर्टरी के ही क्वेश्चन देखेंगे। ये भी हो जाता है कि हम ऑर्गन को ही पढ़ रहे हैं। यस, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं या 20 साल के जो क्वेश्चंस हैं, ओनली ऑर्गन, दैट्स ऑल। ये भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अंडर ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट, कौन से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं? मैक्सिमम फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है तो फिर उनको अपना उनके कॉलेजेस में जो रिकमेंडेड बुक है वही पढ़ाएंगे हम। डेविडसन अगर है तो डेविडसन। इंटर्न्स भी हैं सर, जिसे बता रहे हैं। हाँ नहीं, इंटर्न्स को तो प्रैक्टिकल साइड ज्यादा कवर करना होता है, उनको बेड साइड ज्यादा पता होना चाहिए। इंटर्न्स की ये है कि उनको रिकॉल बहुत फास्ट होना चाहिए, बेड साइड डिफरेंशियल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो किताब हैंडी होनी चाहिए उनके पास में, 2 3 किताबें तो हैंडी होनी चाहिए। एक तो अपनी रिपर्टरी है कोई भी, एक अपनी मटेरिया मेडिका है, और एक मेडिसिन। 3 चीजें होनी चाहिए मोर और लेस अपने साथ में। एनीवे, तो हम डेविडसन और मणिपाल भी देख सकते हैं। मणिपाल अच्छी है, नथिंग लाइक इट। तो अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो मेडिसिन में टॉपिक पहले बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक चलेगा, वी विल गो फॉर दैट। सर वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे सर। हाँ चलो, अच्छा। बहुत बहुत अच्छे। स्टूडेंट्स एक बात और बता दो कि वीकेंड्स में संडेज को करना चाहोगे क्लास, या वीकडेज में टाइम इस 9 बजे के बाद ही? क्योंकि वो संडेज को कहीं ना कोई चल ही रहा होता है, वेबिनार भी होते रहते कुछ है, तो हम वीकडेज में करने का सोच रहे थे, पर अभी इस बार यही है, संडे को फर्स्ट क्लास शुरू करी है। But it will be Tuesdays most हाँ, probably. ट्यूसडे को कर लेते One हैं more weekday. One more weekday according to ग्रुप the. में डाल ले, ग्रुप में ही लिख देना सब, मतलब कर लेते हैं, ट्यूसडे को करते हैं। तो मैम अभी कंटिन्यू करें अभी सर? नहीं, अगर कंटिन्यू तो अब नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ट्यूसडे का रखते हैं हम लोग। और टॉपिक स्टूडेंट जो बताएंगे वो, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे कौन सा पड़ता है। कौन सी तारीख पड़ रही है? 16 17 19 है शायद, 19 नवंबर। 19 नवंबर, ओके ऑल राइट, कोई बात नहीं, 19 नवंबर है, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम।
विल डू दैट, विल डू दैट, नो वो प्रॉब्लम। निकाल देंगे। हाँ, बस वो टॉपिक बताएं, वो वाला टॉपिक। सबसे पहले तो हम टॉपिक को, जैसे जीआईटी ले रहे हैं हम लोग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को देखेंगे कि जीआईटी होता क्या है। और जैसे ईसोफेगस है, फिर हमारा फेरेंक्स है, स्टमक है, डियोडिनम है, ज्यूजिनम है, इलियम है, सीकम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम, एनस। फिर इसकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह है, इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई क्या है, ये जब तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम डिजीज शुरू करेंगे। पहले तो सिस्टम को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि हमें पता हो कि कहाँ पर क्या है, एसिड बियरिंग एरिया कौन सा है स्टमक के अलावा। और देर आर डिजीजेस विच आर, जैसे हमने कहा अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो वो कोलन की बीमारी है। और मैंने कहा रीजनल कोलाइटिस, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी ज्यादा है, होती तो लार्ज में भी है लेकिन स्मॉल में ज्यादा है। कॉक्स एब्डामन की बात किया तो वो सीकम के साथ में इलियम में ज्यादा होता है, और पेरिटोनाइटिस होता है उसमें। और कैंसर देखा जाए तो स्टमक कैंसर होता है, ड्यूडेनम का तो कैंसर होता नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, और ध्यान में रख करके फिर हम कंसेप्ट बनाते हैं, अपने कंसेप्ट बनेंगे तो उसके साथ फिर आप क्वेश्चन भी बनाइएगा, जैसे भी बनेंगे जीआईटी के। तो हम कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी ले लीजिए, जीआईटी ले लीजिए, नर्वस सिस्टम ले लीजिए, तो इट विल बी फैंटास्टिक। आर्थराइटिस ले सकते हैं, जॉइंट ले सकते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स है, जितने भी जॉइंट डिसऑर्डर्स है वो भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जॉइंट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि साहब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। फिर उस प्रकार के, क्योंकि कुछ बीमारियां सिर्फ साइनोवियल जॉइंट की ही होती हैं, समझ रहे हैं ना आप, वो हर जगह पर नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है। नहीं, वो तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड एंड दे विल बी अवेलेबल। आपको वो डॉक्टर मृणाली विल मेक यू अवेलेबल, देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम। Yes. हाँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये। मृणालिनी हैज बिन thinking about it and she is working on this particular thing and already she is making record of whatever we are discussing today. Yes. तो ठीक है, हम फिर 19 तारीख को मुलाकात करते हैं। मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। जी सर। अगर आप जॉइंट डिसऑर्डर शुरू करते हैं तो हम जॉइंट डिसऑर्डर की सबसे पहले एनाटॉमी से अवगत हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे कि सेलिएंट फीचर क्या होते हैं, जॉइंट की बीमारी के जो साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक है ना। और फिर उसके जॉइंट के कंपोनेंट क्या होते हैं। जॉइंट का सबसे पहला कंपोनेंट जो है कार्टिलेज है, फिर बोन है, टू बोन्स विच आर कमिंग इन कम्युनिकेशन, और तीसरा कंपोनेंट है सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट कैप्सूल होती है, फिर लिगामेंट होते हैं, फिर मसल्स होते हैं, फिर वेराइटी ऑफ जॉइंट होती है। साइनोवियल जॉइंट में भी बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट है, कंडाइलर जॉइंट है, तो हर जॉइंट का अपना, साइनोवियल की भी कई वैरायटी है, कोई हिंज टाइप है, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंकल जॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसकी भी हमें इंसाइट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये मसला ऐसा है यहां पर। और फिर उसके बाद तो हम शुरू करेंगे इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हमारी सारी की सारी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस